हेलो एवरीवन, आई होप यू आर एंजॉय योर लेक्चर्स। आप लोग हमारे लेक्चर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। सो वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लास और यूरिका ट्यूटोरियल। सो टुडेज lecture the video is also going to be very important and interesting, in which we are going to cover the important points if we talk of the chapter molecular basis of inheritance. So, आज के इस लेक्चर में मैं आपको समराइज्ड आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी, the important points of this particular chapter, which is definitely going to be very helpful if you are appearing for NEET undergraduate examination, or even the examination related to biological sciences. However, NEET undergraduate के लिए आज के जो points है वो बहुत important है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या important topics या important points है इस वाले चैप्टर में। ओके, and yes, we discussed a lot of important points in the previous lectures also, so please go through the same. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डियर चिल्ड्रन। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इफ वी टॉक ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट? सो देयर इज डीएनए का स्ट्रक्चर ओवर हियर। देन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफ वी टॉक ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स, अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द बेसिस, द आरएनए का स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। सो स्ट्रक्चर्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें इस वाले चैप्टर की, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेंट्रल डॉगमा। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी सेंट्रल डॉगमा, एंड वी नो दैट ऑलरेडी, राइट? हम लोगों को पता है कि सेंट्रल डॉगमा होता क्या है। सो टॉकिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये तो करना ही करना है। होता क्या है? सेंट्रल डॉगमा, यहां से स्टार्ट हो रहा है। पता है आप लोगों को? यस, डेफिनेटली पता है मैम। ओके, सो सेंट्रल डॉगमा, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड नेक्स्ट इज हिस्टोन्स, न्यूक्लियोसोम्स। सो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे? हिस्टोन्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं वो कवर करेंगे। न्यूक्लियोसोम्स की बात करें तो न्यूक्लियोसोम होता क्या है? तो बेसिक सी चीज है। व्हाट आर न्यूक्लियोसोम्स? बेसिकली व्हाट इज द क्रोमैटोसोम? even go and check the structure of chromosome also, and structures are important if we talk of nucleosomes। तो किस तरीके से क्रोमोसोम बनता है, कैसे रैपिंग होती है, कितना उसका साइज है, these points are important when we talk of histones and nucleosomes. So dear children, please do not skip this too. Very important structures. All right, अब आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे इस चैप्टर की। अगर हम बात करें, सो दैट इज डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर। यस, और इसकी तो हम लगातार डिस्कशन, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस consistently. So what is the structure of DNA? RNA. Do it smartly. रटना नहीं है, समझना है कि पिच कितना है, कितने एंगस्ट्रॉन्ग का है, उसको इमेजिन करना है। द वेरी 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, राइट? सो विच साइंटिस्ट, इसमें भी आप क्या करेंगे? कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था? तो साइंटिस्ट का नाम आप लोग देख लीजिएगा। स्मार्टली आपको स्ट्रक्चर करना है। गो थ्रू द लेटेस्ट डेटा और जर्नल्स, एज आई ऑलवेज एम्फसाइज, एंड the basics of DNA and RNA structure, which is like nucleotide and nucleoside structure, basics of the same, basis कौन से होते हैं, and you can go through the previous lectures also if you want to understand the same nucleotide and nucleoside का structures. Then again in this particular thing is like the types.
What are the different types of DNA or RNA? Yes, please do that. Do not skip that. And very important, if we talk of RNA, is जो recently जो question frame हुआ है, that was based on RNA interference. So maybe next time they can give you an experimental based question related to RNA interference or the latest data, क्योंकि काफी researches चल रहे हैं, researches are ongoing. So this is very important, dear children. Learn in a smart manner, right? Okay, so these are the structures you can go through, latest data, as I always say. So ये topics हमने, ये कुछ topics हुए इस particular chapter में से. Now the thing is, one more important topic if we talk of this chapter is Chargaff's rules. Yes ma'am, इसमें तो लगातार questions आ ही रहे हैं. So they are not going to ask you कि what is a Chargaff's rule, what is that and what is that. ये तो हमको पता ही कि मतलब we know that, right? कि ये है क्या, क्या आ रहा है, application based questions आ रहे हैं, numericals आ रहे हैं basically. So please remember the formula. So numerical based questions have been repeatedly framed, and yes, it is one of the most important topics of this particular chapter. Chargaff's rules. एडेनिन के दे देंगे, कोई भी आपको बेस दे देंगे, उनका एक नंबर दे देंगे, एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द अनदर वाला, दूसरे वाला बेस. So let me mark this. Structures of DNA, RNA important, and Chargaff's rule, numericals are very important, dear children. Applications. Okay, next important topic is template and coding strand, and we discussed this too in the previous lecture. मैंने आपको समझाया था कि template और coding strand होते क्या है. And one more is palindrome sequence. This also discussed in the previous lectures. Now let them give you any sequence, right? You can easily tell or you can easily depict the mRNA sequence. For example, चलिए कोई भी आपको वो sequence दे देगी examination में, कोई भी देखिए any sequence, GA whatever, right? So if you know that this particular sequence is coding strand or template strand, you know that, right? You know the basics. तो easily आप उस DNA sequence में से आराम से frame कर लेंगे mRNA की sequence. You can do that, right? Once you find out the template strand, not the coding one, is it? And once you find out the mRNA sequence, तो क्या आप उससे पॉलीपेप्टाइड भी बना सकते हैं, प्रोटीन भी बना सकते हैं, इस तरीके से आराम से कर लेंगे. तो कोई भी सीक्वेंस उनको दे देनी दीजिए एग्जामिनेशन में. फाइंड आउट विच वन इज द टेम्पलेट सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, इज इट? जैसे ही आपको टेम्पलेट सीक्वेंस पता लग जाएगी, आप mRNA निकाल लेंगे और आप इसी तरीके से प्रोटीन या पेप्टाइड भी बता देंगे. इट्स वेरी सिंपल. सिमिलरली, let them give you any sequence and you can easily tell them the palindrome sequence of the same. तो कैसे क्वेश्चंस बन के आने वाले डियर चिल्ड्रन? वो ये नहीं पूछने वाले, हो सकता है बेसिक्स में पूछ ले कि ये टेम्पलेट क्या है, कोडिंग क्या है, बट नहीं, ज्यादातर जो है अगेन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हाई चांसेस है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इन तीन टॉपिक्स में से, टेम्पलेट, कोडिंग और पैलिंड्रोम सीक्वेंस में से. ओके. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सपेरिमेंट्स. कितने साइंटिस्ट लोगों ने, मैनी साइंटिस्ट came, a lot of history, a lot of historical data which proved कि yes भैया ये जो कहानी है जेनेटिक मटेरियल की, ये फाइनली यही है कि DNA is a genetic material. So experiments are important definitely. वो तो करना ही करना है, मैकेनिज्म तो करना ही करना है.
लेकिन उसमें भी आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था, इन विच पर्टिकुलर ईयर. Okay, so experiment which prove what is the genetic material, which scientist and in which particular year. So that's again one of the most important topics. Now very important thing is enzymes involved in three important mechanism, and those are replication, transcription, and translation. Enzymes mechanism we have to do, definitely we have to understand. Please do not mug up, understand the mechanism. और ये मत छोड़िएगा डियर चिल्ड्रन कि एंजाइम्स कौन कौन से हैं इन तीनों प्रोसेसेस में, एंजाइम्स के क्या फंक्शंस हैं. लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, हायर चांसेस अगेन वी आर गोइंग टू आस्क यू द एंजाइम्स. व्हिच एंजाइम्स play which particular role in replication, translation, transcription. So again important, very important topics. Now more stuffs like let's say, yes, genetic code. इसको आप को पूरा टेबल जो है जेनेटिक कोड का, प्लीज डू दैट, अप्लाई ट्रिक्स टू learn the entire genetic code, because the latest examination अगेन एप्लीकेशन और मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बन के आए हैं. सो हो सकता है दे कैन आस्क अगेन. सो लर्न दी एंटायर जेनेटिक कोड. सो मैकेनिज्म बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. Question application I would say basically, there is no mechanism like application based question. Okay, so learn the genetic code. Then if we talk of experimental based questions again, or mechanism or application based questions, तो दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें है. एक है लैक ओपरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन फ्रेम एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन. एंड अदर इज डीएनए fingerprinting. So conceptual clarity is must of these mechanisms. इस तरीके से करना है आप लोगों को, right? So please do not skip these topics too. Smartly करना है. और at last, which I recall, is very important topic, and that is semi-conservative mode of replication. If we talk of DNA replication, भाई कौन से वाला होता है, किस तरीके से प्रूव हुआ था कि सेमी कंजर्वेटिव ही है. Why not conservative? Why not dispersive? So if we talk of this particular topic, ये वाला semi-conservative mode of replication, there are chances like they can frame a numerical, or maybe they can frame like they can ask you a experimental based question too related to this particular topic. तो हो सकता है आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दे और आपसे ये पूछ ले कि जो आगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स आने वाले हैं उनके नंबर कितने होंगे, क्वेश्चन मार्क. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने की हाई चांसेस है. या फिर एक डायग्राम दे देंगे और उस बेसिस पे कोई स्टैटिस्टिकल डेटा आपको दे देंगे, एंड दे कैन इवन
ask you to calculate the whatever. So high chances like आपको बताना है कि नेक्स्ट जो प्रोजेनीज आने वाली है उनके नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने आने वाले, इस तरह के क्वेश्चंस दे कैन फ्रेम इन द एग्जामिनेशन. Okay, so dear children, whatever I covered in this particular lecture, please do not skip, go through these points. तो ये वाला जो चैप्टर है आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा. स्मार्टली हम लोग चल रहे हैं और आगे के लेक्चर्स में भी हम लोग स्मार्टली चलते रहेंगे. राइट? So keep practicing, dear children. All the very best. Thank you so much.